Hello guys, welcome back to my channel Salman Sheikh's Capital Investments. The reason why I've named this channel Salman Sheikh's Capital Investments is Salman Sheikh is my name and Capital Investments is the name of my company. It's a private limited company. और जैसे कि कंपनी का नाम मेरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स है और मैं इन्वेस्टमेंट्स की बात ना करूँ तो कैसे चलेगा। तो चलिए आज हम बात करेंगे तीन सबसे बढ़िया बुक्स जो इन्वेस्टमेंट्स के लिए। गाइस, अगर आप मेरे चैनल को रेगुलरली विजिट करते हो और ये चैनल देखते हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और जो मेरे बाकी स्टॉक ऑप्शंस ट्रेडिंग एंड द डेली मार्केट रिपोर्ट्स उसकी प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। प्लीज़ डू चेक दैट आउट एज वेल। So without further ado, let's start with the top 3 greatest books on investment. So the first greatest book on investment that I read was The Intelligent Investor by Benjamin Graham. The Intelligent Investor by Benjamin Graham is also the very first book that I started reading as a very young investor in 2014. So this book is written by the economist Benjamin Graham, who is also the first coach of our most famous intelligent investor, that is Mr. Warren Buffett. So Mr. Warren Buffett को कौन नहीं जानता? He has also been one of the most richest person. He is also my idol for investing. And by getting inspired from Warren Buffett, I had entered into the stock market. So the intelligent investor actually propagates on concentrating on the real life performance of the companies and the dividends that they receive, rather than paying attention to the changing sentiments of the market. सो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में एक मिस्टर मार्केट का जिक्र काफ़ी बार किया गया है, एंड मिस्टर मार्केट इज़ वेरी मूडी, तो वो कभी भी ऊपर जाता है कभी भी नीचे जाता है, उसका जस्ट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशंस ऑफ द मार्केट. बट इफ यू फोकस ऑन द रियल लाइफ परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनीज एंड इन द लॉन्ग रन यू विल बी प्रॉफिटेबल. दैट इज व्हाट इट ट्राइज टू से. Also, the intelligent investor actually gives you some method to analyze companies, based on the intrinsic value. So it provides you a lots of margin of safety for a room for human error, and also there is lots of price value discrepancies in the market, and that's why you should focus on stocks that are being traded at a market price that is lower than the intrinsic value. That is what provides you a margin of safety and the room for error. Even if you go wrong in your decision, there will still be a lot of time to save your decision and come out profitably. Second best book on investment that I read was The Security Analysis by David Dodd and Benjamin Graham. And this book I felt was a little bit advanced than Intelligent Investor, and it required a lot of knowledge. This book was actually intended by the authors to keep it as a common sense guide for investors, but actually it turned out to be the genesis of financial analysis and corporate finance that we study in lots of B schools and in financial programs. So इसमें काफ़ी डिटेल में कॉर्पोरेट फाइनेंस और फाइनेंशियल एनालिसिस, सिक्योरिटी एनालिसिस के बारे में दिया गया है. सो ये जो क्रेडिट रेटिंग कंपनीज है, यूज ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स टू डू द क्रेडिट रेटिंग सिक्योरिटी एनालिसिस. ऑल्सो कंटेन्स लॉट्स ऑफ यूजफुल information on how to analyze all kinds of investment, and that is not just the common stocks but also the bonds and the preferred issues. Now it also promotes the thinking that if you're trying to beat the market in the short run, then it's a fool's errand. But I think lots of the modern day traders will debate it, because we have lots of financial instruments that are readily available and easily accessible by everyone, like futures and options. So maybe in cash market intraday it will still be a fool's errand. Even I think so. Surely in options trading in the derivatives market, people have definitely earned more in the short run. जो तीसरी सबसे बेस्ट बुक रही है वो है द धंधो इन्वेस्टर by Monish Pabrai. So the Dhandho method actually expands on the groundbreaking principles and value investing expounded by Benjamin Graham, Warren Buffett and Charlie Munger. So तो चार्ली मंगर जो वॉरेन बफे के पार्टनर रहे हैं, उनकी जो कंपनी है वॉरेन बफे की बर्कशायर हैथवे, उसमें इन सब का जो थॉट फिलॉसफी है, जो इन्वेस्टिंग फिलॉसफी है, जो बेंजामिन ग्राहम, वॉरेन बफे, चार्ली मंगर, इन सब की जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी का एक निचोड़ है इस बुक में, समझो. एंड इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन सच अ वे कि इंडियन लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में, सो दे कैन डिप्लॉय मोर इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट एंड इंडियन मार्केट. सो आपने अगर वो सब फॉरेन बुक्स जो पढ़ी है, दैट इज लाइक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इज लाइक द बाइबल ऑफ इन्वेस्टिंग, अगर वो सब पढ़ी है, सिक्योरिटी एनालिसिस पढ़ी है, देन डेफिनेटली द धंधो इन्वेस्टर, व्हेन यू रीड इट देन यू कैन एग्जैक्टली अप्लाई इट इन द इंडियन मार्केट्स. सो इसका मतलब ये नहीं है कि दोज बुक्स आर एक्सट्रीमली वेस्ट एंड इट्स ओनली for the foreign markets, but the intelligent investor and security analysis are good for any kind of investment analysis.
The second point I like to highlight about this book is that the author Monish Pabrai, he is also a founder and managing partner of the Pabrai funds. In this books he explains this through lots of examples, like the example of how the Patel community became the largest owners of Mattel businesses, or how the Mittal family, the Mittal made his fortunes by following the same principles. Or as you know, the Richard Branson, who's currently the famous for going to space, and he built his Virgin Atlantic. So all those things are explained here, and through these small examples he had taught how the principles taught by the Warren Buffett, Benjamin Graham, and Charlie Munger is actually applied by one of the greatest businesses to build such great businesses. So इन तीनों में से कौन सी बुक आपकी फेवरेट रही ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा इन द कमेंट्स बिलो. और इसके अलावा और कौन सी बुक्स आपने रीड करी है जो इन्वेस्टिंग के बारे में आपको अच्छी लगी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. और इसके अलावा आप चाहते हो कि मैं आपको कोई ऑप्शंस ट्रेडिंग या टेक्निकल एनालिसिस पे कोई बुक का रिव्यू लेकर आऊँ, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. अनलेस यू डू नॉट टेल मी इन द कमेंट्स बिलो व्हाट डू यू गाइस वांट, व्हाट काइंड ऑफ वीडियो शैल आई कम अप विद, या आपकी कौन सी बुक्स फेवरेट है. सो जब तक ये आप तक नहीं बताओगे मुझे कमेंट्स में, तो मुझे कैसे पता चलेगा गाइस. सो एज अ कंटेंट क्रिएटर आई वांट टू ब्रिंग मोर कंटेंट टू यू दैट इज़ यूजफुल टू यू इन योर लाइफ एंड इन योर मेकिंग मनी प्रोसेस. सो आपकी स्टॉक मार्केट जर्नी में जो हेल्प करे वो मुझे बताओ, आपके लिए जो हेल्प करे, मनी मेकिंग में हेल्प करे, ऐसी चीज़ें मुझे बताओ. मैं उसके लिए कंटेंट लेकर आऊँगा ताकि आपका हेल्प हो जाए. थैंक यू सो मच. So guys, these books are in the order of chronological order of the way I read it. तो सबसे पहले The Intelligent Investor, then The Security Analysis, and then The Dhandho Investor. So आप अपना ऑर्डर चूज कर सकते हो बेस्ड ऑन योर कंफर्ट. आप बोलोगे कि आप इतनी सारी इन्वेस्टिंग के बारे में बात कर रहे हो, आपकी कंपनी का नाम इन्वेस्टमेंट्स है, सो बट आप अपने चैनल पे तो सिर्फ ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में बात करते हो. वेल द रीजन इज गाइज, आई हैव यूज्ड टू डू lots of investments in the company in the cash market. But since I've learned the FNO and I've also started my own company, so I'm completely invested in my company. And the business of my company is options trading. तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैंने जो फंडामेंटल नॉलेज जो सीखा, जो फंडामेंटल एनालिसिस सीखा, वो सब वेस्ट हो गया. नो, द फंडामेंटल एनालिसिस आई यूज टू रन माई ओन कंपनी. I use all those ratios and the profitability parameters and the moat building, different ways of generating income, and all those techniques. All the learnings that I get from these books, I definitely use in my own company, and I'm running this business. And that is why I'm 100% invested in my own business. And my business of my company's capital investments is options trading. And I do not do much of futures because आपको तो पता है, if you trade in futures, and there is no future. But if you trade in options, then there are plenty of options. So with this note, thank you so much for watching. And वीडियो पसंद आया तो do hit the like button. इससे जो क्रिएटर है, कंटेंट क्रिएटर, उसको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है. और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे. ऑल बेस्ट, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय.